Hello students, let's read the question and the question says, which of the following statement is not correct regarding class Ascomycetes? So सबसे पहला statement दिया हुआ है Conidia are asexual spores produced endogenously on conidiophore. Next statement is ascospores are the sexual spores produced endogenously in asci. Aspergillus neurospora claviceps are Ascomycetes and the mycelium is generally branched and septate. तो जैसा हम क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन इज क्लास एस्कोमाइसिटीज. तो जल्दी से पढ़ लेते हैं एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इफ वी टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज, दे आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई. माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. Along with this, if we talk about their nature, तो हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म भी प्रेजेंट है एक, that is yeast. Yeast is your unicellular fungi. तो yeast हमारे पास कैसे एक unicellular fungi आ गया. Other than this, if we talk about its reproduction, तो reproduction kids is going to take place with the help of asexual and sexual mode. तो asexual reproduction हमारे पास कोनिडिया से होगा. Conidia are formed exogenously on mycelium. So जैसे ये हमारा mycelium है, mycelium पे एक branch बन जाएगा, and on this branch what will happen? There will be formation of exogenous conidia. तो इस तरीके से exogenously conidia बन जाएंगे. But if we talk about your sexual reproduction, so sexual spores हमारे पास बनेंगे after the fusion of two myceliums. तो mycelium आपस में fuse कर जाएंगे, after which there will be formation of the zygote. और zygote के बाद फिर हमारे पास क्या होगा? there will be formation of a sac like structure. तो ऐसे sac like structure बन जाएगा जिसके अंदर ascospores present होंगे. So this is how your ascospores will be present. तो ये आपका mycelium हो गया. This sac like structure is known as asci. asci के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे पास ascospores प्रेजेंट है. And these ascospores are endogenous in nature. अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको endogenous बोला. Now let's talk about their example. तो example में हमारे पास सबसे important और एक very useful example आ जाता है, that is penicillium. Other than this, there is presence of Aspergillus, Neurospora, Claviceps, Morels and Truffles. हमारे पास एक edible fungi है, Morels and Truffles. तो सारे इसके examples आ जाते हैं हमारे पास किसके? Ascomycetes के. Now let's go back to the question. So question को पढ़ते हैं. अब statement A बोलता है Conidia are the asexual spores. Correct. They are produced endogenously. No, they are produced exogenously on conidiophore. ये जो ब्रांच होती है हमारे पास, this branch is known as conidiophore, और इसके ऊपर हमारे पास exogenously conidia बनेंगे. So this is a wrong statement. Next one, ascospores are sexual spores produced endogenously in asci. बिल्कुल सही है. Aspergillus neurospora claviceps are Ascomycetes fungi. बिल्कुल सही है. And mycelium is generally branched and septate. Correct. बिल्कुल सही है. So let's read the question again. The question is asking about the not correct or incorrect statement. Hence the correct answer will be option A. Option A हमारे पास क्या है? Incorrect statement है. I hope it is clear to everyone. With this, thank you.